Now, let me introduce. So I hope you understand. I hope you understand things so far. So far we have introduced I. हमने I को introduce किया है और I को introduce करने के बाद, wait a moment, we have introduced I, and after introducing I, we have seen how to evaluate any integer power of I. Now let us go ahead and let us introduce complex numbers. Now we are going to introduce complex numbers. What are complex numbers? You try solving this quadratic equation first. X square plus x plus 1 is equal to 0. Let's try solving this quadratic equation. इस quadratic equation को solve करने की कोशिश करते हैं. And then if I solve this quadratic equation, I'm going to get minus 1 plus minus under root 1 square minus 4 into 1 into 1, 4 into 1 into 1 divided by 2 into 1. मैंने यूज कर लिया श्रीधराचार्य फॉर्मूला. Okay, so I'm using Sridharacharya here, Sridharacharya formula. So let's go ahead and use it. Okay, I need to collapse this, this somehow. Yes, please. So guys, we are going to have x is equal to minus 1 plus minus under root 1 minus 4, that is minus 3 divided by 2. Which simply means that this equation doesn't have a solution existing. लेकिन उस नॉन एग्जिस्टेंट सॉल्यूशन को भी हम एक नाम दे रहे हैं. इसका मतलब है कि ये कभी जीरो नहीं होगा. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 एक्स की किसी वैल्यू के लिए नहीं होगा. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 विल नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स. व्हाई? बिकॉज वी हैव एन अनरियल थिंग कमिंग. एक अवास्तविक, एक काल्पनिक, एक अनरियल, एक ना एग्जिस्ट करने वाली चीज यहां पर पैदा होती है, और वो है रूट ओवर माइनस 1. वो क्या है? वो है रूट ओवर माइनस 1. दैट इज व्हाट? दैट इज रूट ओवर माइनस 1. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स नाउ decouple root 3 and my root over minus 1 and divided by 2. Then I'm gonna get x is equal to minus 1 plus minus I root 3 minus 1 plus minus I root 3 divided by 2. I have with plus sign minus 1 by 2 plus I root 3 by 2, and with minus sign x is equal to minus 1 by 2 minus I root 3 by 2. We are going to have such numbers where we will have the format of a plus IB, or the format of a minus IB. Such numbers which have one part free from imaginary world, but one part representing the imaginary world. Such numbers where we have one part free from the imaginary world and another part which is just a pure creation of your mind. Such numbers are not real, and therefore, and probably in initial days it was difficult to make people understand these numbers. That's why they named them complex numbers. Probably शुरुआती दिनों में ये काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा होगा कि लोगों को समझाया जा सके, कन्विंस किया जा सके इस बात के लिए कि ऐसी एक चीज भी है, और इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों इन नंबर्स को नाम दिया गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर्स. Such numbers must have been given the name complex numbers probably because it must have been very difficult, very challenging for common public to understand what exactly do they represent, because they represent nothing that can exist. Exist नहीं कर सकता है ऐसा कुछ भी. Unreal, दिमाग का फितूर, imaginary, काल्पनिक. मेरे प्यारे दोस्तों, such numbers are known by the name complex numbers. Such numbers are known as complex numbers, and we say the part that is free from I, that part is known by the name real part of that complex number, and the part that is coupled with I, that part is known as imaginary part of that complex number.
जो पार्ट आई से फ्री है उस पार्ट को रियल पार्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. So when you see 3 plus 4i, it's a complex number. When you see 5 plus 9i, it's a complex number. When you see 10 plus 13i, it's a complex number. When you see 12 plus 5i, it's a complex number. ये सारे complex numbers हो जाएंगे. All these are going to become complex numbers, complex numbers, complex numbers, complex numbers. Now, as I said, that once you create this fantasy of your mind, then you will have to build वन होल वर्ल्ड अराउंड इट. इसके आसपास एक पूरी दुनिया बनेगी फिर, और वो दुनिया बनना शुरू हो चुकी है. इसके आसपास एक दुनिया बनेगी और वो दुनिया धीरे 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 बनना शुरू हो चुकी है. सो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स नाउ, एंड वंस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, let us now go ahead and do understand that what are the other ways to represent such numbers. ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के और क्या तरीके हैं, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स ट्राई अंडरस्टैंडिंग. दिस इज वन वे टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. वन वे टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स. वन वे टू रिप्रेजेंट complex numbers is this only, that you have seen already, and that is a plus ib, where a is called by the name real part and b is called by the name imaginary part. a को कहते हैं real part और b को कहते हैं imaginary part. लेकिन और भी तरीके बनाए लोगों ने, and वो क्या तरीके हैं? Let's check them out. I would use this. और क्या तरीके हैं? What are the other ways? Well, एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका, बहुत 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 इंटरेस्टिंग तरीका. इसी आप इस एक्सिस के अलोंग क्या रिप्रेजेंट करते हो? एक्स. इस एक्सिस के अलोंग क्या रिप्रेजेंट करते हो? जब आप लिखते हो ए, तो उसका मतलब होता है कि जीरो से आप यहां तक गए और आपने ए लिख दिया. लेकिन जब आप लिखते हो माइनस ए, तो उसका मतलब होता है कि आप ओरिजिन से लेफ्ट साइड को गए और आपने माइनस ए लिख दिया. When you write plus a, you measure it on the right side. When you write minus a, you measure it on the left side. When you write plus a, you measure it on the right side of the origin. When you write minus a, you measure it on the right side of the origin. Now see something very interesting. Now see something very interesting. In fact, और ज्यादा correlate करने के लिए, let's use b here. So when you write plus b, you represent it on the right side of the origin. You write minus b, then you represent it on the left side of the origin. ध्यान से समझियो. अब I can always write this minus b as minus 1 multiplied by b. But minus 1 is actually I square. So I can write it I multiplied by b. एक काल्पनिक दिमाग का फितूर, और फिर उस दिमाग के फितूर के अराउंड एक पूरी दुनिया क्रिएट होगी. एंड एम्ब्रेस दिस इमेजिनरी वर्ल्ड ऑफ आयोटा. ऐसा लगता है जैसे दो बार आई से मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस बी 180 डिग्री से रोटेट हो गया. इट सीम्स एज इफ प्लस बी एज अ वेक्टर, once it is operated by I twice, it rotated by 180 degree. It seems once we operate plus b twice by iota, then it rotates by 180 degree. ऐसा लगता है जैसे प्लस बी वेक्टर को अगर मैंने आयोटा से दो बार ऑपरेट किया तो वो 180 डिग्री से रोटेट हो गया. एक बार आई से ऑपरेट करते तो क्या होता? एक बार आई से ऑपरेट करते तो क्या होता? Going by this logic, if I would have operated b once with I, it must naturally have rotated by 90 degree counterclockwise. अगर इस लॉजिक के साथ चलें कि दो बार I से मल्टीप्लाई होने के बाद एक पॉजिटिव वेक्टर 180 डिग्री से रोटेट हो गया, तो आई से एक बार ऑपरेट होने के बाद वो वेक्टर
कितने एंगल से घूम जाएगा? वो वेक्टर 90 डिग्री से घूम जाएगा. That vector will rotate by 90 degree. That means if you represent 4 along the horizontal axis, you must represent 4i along the vertical axis. You represent 4 along the horizontal axis, then 4i must be represented along the vertical axis. People said कि यार ये तो मुझे पता है +4 इधर है तो -4 इधर होगा, लेकिन -4 को मैं ऐसे भी तो देख सकता हूं कि -1 वहां पर i² रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसका मतलब वो +4 दो बार i से ऑपरेट होने के बाद 180 डिग्री से रोटेट कर गया. अगर ऐसा है तो एक बार i से रोटेट होने के, एक बार i से ऑपरेट होने के बाद 90 डिग्री रोटेट हो जाना चाहिए उसे. और इसलिए आज के बाद से जब भी कोई नंबर i से फ्री है तो उसे हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे. जब किसी नंबर में i इंट्रोड्यूस कर दिया गया है तो उसका 90 डिग्री से रोटेशन हो जाएगा और हम उसे वर्टिकल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे. Argand was the scientist who first gave this concept. Argand was the scientist who first gave this concept, and therefore on his name only, my dear friends, we call on his name only, we call this diagram as Argand diagram, where any real part is represented along the horizontal axis, and then I must have represented be like this. But if you're writing IB, then this vector will rotate by 90 degree, and this vector will become like this. My dear friends, Argand is the name, and that's why this diagram is known by the name Argand diagram or Argand representation of complex numbers. We simply rotate that number by 90 degree if I is attached to that number. अगर किसी नंबर के साथ i अटैच हो गया तो उसका मतलब होगा उसका 90 डिग्री से रोटेशन हो जाना. मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इस पॉइंट को कहेंगे z को रिप्रेजेंट करने वाला, a प्लस ib को रिप्रेजेंट करने वाला पॉइंट. दिस पॉइंट इज सेट टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस ib. दिस पॉइंट is said to represent the complex number a plus ib. Let's note these observations down. इस ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर लेते हैं फटाफट, इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े. Before we move ahead, let's quickly note down these observations. So guys, this is as simple as it is. You can always represent a complex number on a two-dimensional plane, on a two-dimensional diagram like Cartesian diagram, but this is not a Cartesian diagram, mind it. Why? Because you are dealing with unreal things. Because you are dealing with unreal things, this is not a Cartesian diagram. This is just the dimag ka fitur. This is the creation of your mind, but you can represent it nonetheless. So if you have to represent 5 plus 4i, all you need to do is move 5 steps along the horizontal axis and then 4 steps along the horizontal axis. But since 4 is operated by I, it's going to rotate by 90 degree, and that 4i will be represented like this. The point P thus obtained is said to represent the number 5 plus 4i. इस तरह से जो पॉइंट मिलेगा आर्गेंट प्लेन पर, उसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन कहेंगे. दैट point will be said to represent the complex number. Cool. We can actually now treat it like a vector, and treating it like a vector, we can directly join O and P, and we can calculate the modulus of this complex number, and we can calculate the argument of this complex number. R is known by the name modulus, and theta is known by the name argument of this complex number. So how would you calculate R?
5 units this side and 4 units this side. R can be written as under root 5 square plus 4 square very clearly. And how can you calculate theta? Theta can be very easily calculated as tan theta is equal to 4 divided by 5. R is known as modulus and theta is known as argument of this complex number. तो दोस्तों इस तरह से हम उस पॉइंट के थ्रू एक आर्गेन प्लेन पर रियल पार्ट को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर और इमेजिनरी पार्ट को वर्टिकल एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हुए उस आर्गेन प्लेन पर एक पॉइंट के थ्रू कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमने यहां पर 5 प्लस 4i उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया है। जस्ट लाइक वी हैव रिप्रेजेंटेड द कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 4i, सिमिलरली any other complex number can be represented by a point on the argand plane. Cool. Now, if I connect origin to that point directly, that point will be used as a vectorial information of that complex number. उस तीर को हम लोग एक वेक्टोरियल इंफॉर्मेशन के तौर पर यूज करेंगे एक गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। To represent a given complex number, we will use that red arrow, whose magnitude is simply under root real part square plus imaginary part square, and we can write tan theta is equal to 4 upon 5. R is known by the name modulus of, R here is known by the name modulus of complex number. R को हम लोग कहते हैं modulus of complex number, and theta को हम लोग कहते हैं argument of complex number. Theta is known by the name argument of complex number. Argument of complex number. Now, let us try solving one or two problems based on this, where let's say the complex number is given in the form, normal form, simple form, like a plus ib, and we try to convert it to the vector form. We try to convert it to this polar form. This is called as polar form. So I can write z is equal to a plus ib. I can write z is equal to a plus ib, where I know a is representing this much and b is representing this much. B is representing this much, and I can write a plus ib directly by this arrow. A plus ib को मैं directly इस arrow से represent कर सकता हूँ. Cool. So this is representing a plus ib. This point is representation of that complex number on argand plane. This is real axis and this is imaginary axis. ध्यान से समझियो, this much is a and this much length is b. So naturally this is representing under root a square plus b square, and this angle theta is called argument. Now, if I ever need to convert z from this form to the form that can be written in terms of r and theta, then this is going to be the procedure. अगर कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्मेट से आपको ऐसे फॉर्मेट में लेकर जाना हो जो r और थीटा में डिस्क्राइब्ड हो, तो ये प्रोसीजर फॉलो होगा। ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो। Then this is going to be the procedure that we will follow. So what's the procedure? सबसे पहले आप अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। Now very clearly this under root a square plus b square is representing r. Very clearly this under root a square plus b square is representing r, and a upon under root a square plus b square is representing cos theta. A upon under root a square plus b square is representing cos theta. A upon under root a square plus b square is representing what? It is representing cos theta. So that is representing cos theta, and b upon under root a square plus b square, b upon under root a square plus b square is representing sin theta. Clear? Is that clear to all of you? I hope that's clear to all of you. So my dear friends, we have this particular format coming in. So I can write r cos theta plus I r sin theta. Now this is called the polar form of representation of a vector. इसे कहते हैं, sorry, complex number.
इसे कहते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का पोलर फॉर्म, और शॉर्ट में इसे ऐसा लिखते हैं आर एंगल थीटा। तो आर एंगल थीटा लिख दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये एंगल थीटा का मतलब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। दिस एंगल थीटा रिटन हियर मींस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऑल राइट, सो लेट अस गो अहेड एंड ट्राई सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स। कितने आदमी थे? अभी तक हमने किए हैं टोटल 4 प्रॉब्लम्स। ये रहा दोस्तों पांचवा, ये रहा दोस्तों पांचवा प्रॉब्लम। पांचवा प्रॉब्लम लेट से है हमारे पास z इज इक्वल टू 1/2 प्लस I√3/2, 1/2 प्लस I√3/2। कन्वर्ट इट टू पोलर फॉर्म, कन्वर्ट इट टू पोलर फॉर्म। सो पहले मैं करके दिखाता हूं और उसके बाद आपको मैं ज्योमेट्रिकली दिखाऊंगा कि जो प्रोसीजर फॉलो किया गया है उसने ज्योमेट्रिकली एक्चुअली अचीव क्या किया है, बैकग्राउंड में हुआ क्या है। फर्स्ट आई विल सिंपली फॉलो द प्रोसीजर एंड कन्वर्ट इट टू द पोलर फॉर्म, एंड देन आई विल शो यू दैट व्हाट एग्जैक्टली has happened in the background, what exactly has happened geometrically in the background. So first of all, I told you whenever you need to convert whenever you need to convert a complex number from simple form to polar form, then always multiply and divide by under root a square plus b square. तो हमेशा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दे। चलो जी, डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, नो प्रॉब्लम। सो 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1/2 स्क्वायर 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 स्क्वायर रूट ओवर दिस, इसी से डिवाइड कर दिया। We are also dividing by the same quantity, 1/2 square plus √3/2 square under square root. So we are multiplying by the same quantity and we are dividing by the same quantity. Now this is going to become 1/4 plus 3/4. 1/4 plus 3/4 becomes 4/4, that is 1. And this again becomes 1/2 divided by 1. And this again becomes √3/2 divided by 1. So my dear friends, end of the day we have 1, and 1/2 can be written as 1/2 can be, एक्चुअली ये जो गिवन था ये ऐसा था कि इसको आप सीधे सीधे लिख सकते थे। 1/2 और √3/2 सीधे सीधे ही दिख रहे हैं कॉस और साइन के कौन से वैल्यूज के लिए होते हैं, 1/2 cos π/3 और √3/2 sin π/3। लेकिन मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि दिस होल प्रोसीजर विल ऑलवेज बी फॉलोड लाइक दिस। सो 1 cos π/3 plus sin π/3, this complex number has the modulus 1 and this complex number has the argument π/3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस 1 है और आर्ग्यूमेंट π/3 है। एक और करें फटाफट, लेट्स डू वन मोर। चलो इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। So let's do one more quickly. This time let us say I'm given z is equal to 1 plus I. So what I'm going to do, I'm going to divide and multiply by under root a square plus b square. Divide and multiply by under root a square plus b square. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ऐसा करने के बाद आपको √2 मिलेगा और यहां मिलेगा 1/√2 प्लस I 1/√2, I 1/√2। माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली आई हैव √2 एंड 1/√2 और 1/√2 कॉस और साइन के कौन से एंगल पर होते हैं ये वैल्यूज? वेरी क्लियरली cos π/4 और sin π/4 होते हैं 1/√2।
cos pi by 4 and sin pi by 4, they both are 1 upon root 2. So ultimately, I have successfully converted it into the format of r cos theta plus I sin theta, r cos theta plus I sin theta. I can also write a shorthand notation which is root 2 and pi by 4. ये शॉर्टहैंड नोटेशन भी लिख सकते हैं हम लोग। बैकग्राउंड में हो क्या रहा है जब ये सारा काम आप कर रहे हो, तो जब ये सारा काम आप कर रहे हो तो बैकग्राउंड में ये हो रहा है। When you are doing this multiplication and division by under root a square plus b square, in the background this is happening, that this complex number is real part 1, imaginary part also 1. Real part is 1, imaginary part is also 1. So basically the modulus will become 1 square plus 1 square, which is under root 2, and this angle will become tan theta 1 upon 1, 45 डिग्री। अब आप देखो रियल पार्ट 1 जो है उसको आप लिख सकते हो रूट 2 cos pi by 4, और इमेजिनरी पार्ट को लिख सकते हो रूट 2 sin by pi by 4. The real part can be written as root 2 cos pi by 4, and the imaginary part can be written as root 2 sin pi by 4. Yes, that's what can be done easily. So this procedure is always going to work whenever someone asks you to convert a complex number from simple form to the polar form. Always multiply and divide by under root a square plus b square. जब भी आपको किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंपल फॉर्म से पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, सिंपली रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। नेक्स्ट सेशन में हम लोग सीखेंगे आइलर्स फॉर्मूला के बारे में, जो कि अपने आप में एक अमेजिंग फॉर्मूला है कॉम्प्लेक्स नंबर्स से डील करने के लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर्स से डील करने के लिए आइलर्स फॉर्मूला एक अमेजिंग फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आइलर्स फॉर्मूला डिराइव करेंगे और उसकी बेसिस पर हम बहुत सारे ऑपरेशंस भी करेंगे। सो नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू डू आइलर्स फॉर्मूला एंड वी आर गोइंग टू डू नंबर ऑफ बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। टिल देन थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय। मचाना जारी रहे।